Welcome back, children. So today we are going to see the next part of the chapter, study of semiconductor components, that is thyristors. Okay, till now we saw types of diodes, types of transistors. Now we are coming to thyristors. Let us first understand what are we, what variations have we seen till now. First, we saw diode, right? Diode was just PN, right? There were only two layers, PN junction diode, and you saw different types of diodes in the previous classes, right? So there are different types of diodes. So the basic diode has two layers, P and N. Next, now this is a diode. Then we went on to transistors. Now what is happening in transistors? Now we have three layers, NPN or PNP. That means one more addition. यहाँ पे दो blocks थे. Now we have three blocks here. So this was a transistor. Now what we are going to do is we are going to have four layers. That is known as thyristors. So four layers. I don't have place over here. That is known as four-layer semiconductor devices are known as transistors. So it can be PNPN. This is known as a thyristor. So can you see what is increasing? The layers are increasing. Here it was only two people. Here there are three. Here there are four. So this till here we have seen. Now this is the last part, that is thyristors. Now in your syllabus for this year, most of this part, four-layer semiconductor devices, thyristors, is deleted. So it's going to be a very short video, and the structure is deleted, applications are deleted. So you just need to see the symbol, how it looks like, and just an overview you have to take of all the types of thyristors. Okay, so I will just share my screen and we will proceed with the study of thyristors. Fine. So starting with, as I told you, thyristors are four-layer semiconductor devices, and they can, the advantage is they can be used as a switch. Okay, तो इसमें दो लोग हैं, SCR और triac. You will see that some thyristors, अब देखो ये ऑन कर दिया मैंने PN junction diode, अगर मैंने बैटरी लगा दी, ऑन कर दी, can you control the current flowing through it? To some extent, yes, using the external battery, yes. But in thyristors, there is one more terminal known as the gate. Gate terminal, जब तक अभी even if you give the voltage, अगर बहुत high voltage दिया तो yes, the operation is different. But gate voltage determines कि कितना current flow होगा उसमें. Okay, so gate terminal ऐसा एक terminal है, जैसे हम कोई नॉब होता है, स्पीड डिटरमाइन करता है, फैन के रेगुलेटर्स आपको पता होंगे, you increase it, the speed increases, somewhat like that. Okay, there's a gate terminal to some of the thyristors which controls how much current can flow through the device. So it's good, right? So we will see the first type of thyristor, that is an SCR, that is silicon controlled type of a thyristor. Okay, so this is a silicon controlled rectifier, SCR. Now in all, there are three types, SCR, diac and triac. Three types of thyristors are there. You need to know the full form, number one. Number two, symbol and a rough working. Okay, because the structure is deleted, applications are deleted. So you just have an overview of all this is needed. Okay, completely it's not deleted, but 50% of it is deleted. So you just need to whatever I'm explaining in this class, you need to know that much only. Okay, so what does SCR stand for? Silicon controlled rectifier. Fine. So this is how the structure of the SCR looks like. If you can see, अगर मैंने इसको tilt किया, देखो ऐसे दिखेगा, normal PN junction diode बनाया है. What is the speciality is this, I'll put it in some other color. This gate, an additional terminal is there and it is known as the gate terminal. This is the speciality of this particular silicon controlled rectifier. Okay, so it's obviously a four-layer silicon device, right? Can you see this? You can see this.
PNPN. 1, 2, 3, 4. Okay, so there are 4 layers. How many junctions have we got? I'll take a red color. 1, 2, 3. It's a 3 junction device. So all this is going to be asked. Okay, so just basics you need to understand very well. 4 layer device and 3 junctions are there. PNPN. चलो इसको मैं divide करके देखती हूँ. मतलब मैं ऐसे भी divide कर सकती हूँ और ऐसे भी divide कर सकती हूँ. See here, this is the transistor model of SCR. PNP, ये बन गया एक ट्रांजिस्टर. NPN, ये बन गया दूसरा ट्रांजिस्टर. Okay, so what is the function of this gate? ये गेट क्या है? 3 टर्मिनल्स है, एनोड कैथोड. ये तो आपको पीएन जंक्शन डायोड में भी पता था, एनोड कैथोड. एंड आई हैव टोल्ड यू हाउ टू रिमेंबर एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है. उल्टा के को ट्रेस करना है. ये देखो यहाँ पे ये है उल्टा के, ये बन गया उल्टा के. दैट मीन्स दिस इज कैथोड एंड बचा हुआ इज एनोड. ठीक है. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? ये चौथा बंदा जो नया आया है, दैट इज गेट. What is the speciality of that? Now, when gate is 0, the SCR is in off condition. Okay, it is in off condition. Obviously, अभी हमेशा ऑफ करेगा. वोल्टेज का इधर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है. इफ मैंने एनोड टू कैथोड का वोल्टेज जो है मैंने बहुत हाई रखा तो करंट फ्लो हो सकता है. बट आइडियल कंडीशंस में ऐसा नहीं करते. गेट है कंट्रोलिंग टर्मिनल, तो गेट को ही कंट्रोल देना चाहिए. व्हेन गेट इज 0, दिस इज ऑफ. ओके, नाउ व्हेन गेट इज ऑन, ओके, व्हेन गेट करंट इज अप्लाइड, तो देखिए यहाँ पे गेट करंट अप्लाई किया जाएगा. ओके, व्हेन द गेट करंट इज अप्लाइड, देयर दिस ट्रांजिस्टर, this is a PNP transistor, right? So there is some gate current which is going and to directly towards the base of this particular transistor, right? So this IB1, इसके base पे gate current जा रहा है, so this is going to be switched on. Okay, so this gate जो base के लिए जा रहा है, ये transistor, ये बंदा क्या करेगा? कलेक्टर को करंट देगा. Okay, and you know that जो भी करंट बेस के ट्रांजिस्टर के बेस पे जाता है वो एम्पलीफाई होता है. क्यों एम्पलीफाई होता है? क्योंकि एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है. IC इज इक्वल टू लिखना था, वो T बन गया, इज इक्वल टू अल्फा इंटू IB. अल्फा क्या है? करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर. तो ये करंट यहां से जाके ये बंदे को भी चालू कर देता है and the SCR is on. Okay, इसका बेस करंट बन गया and the SCR is on. Okay, so if I see the VI characteristics, वो कैसे रहेगा? Just a little bit of push. VI characteristics कैसे रहेगा? A little bit of push and then I get current. ठीक है, थोड़ा जैसे गेट करंट ऑन होता है, you will get the what you can say, you will get the current flowing. Okay, but if IG is 0, ये 0 ही चलते रहेगा, 0 पे ही चलते रहेगा, 0 पे ही चलते रहेगा. Okay, so that अगर वोल्टेज बहुत हाई कर दिया, then current will start moving. So if this is V and this is I, ठीक है, तो वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाओगे तो ही करंट मिलेगा. इफ IG is equal to 0, this is for IG is equal to 0. तो गेट करंट अगर नहीं दिया है तो ये ऑफ रहेगा. एज सिंपल एज दैट. गेट करंट दोगे तो इसके बेस पे जाएगा. करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर की वजह से थोड़ा और एम्पलीफाई करके, एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, बढ़ा के कलेक्टर करंट, इसका बेस करंट बन जाता है, ये भी ऑन हो जाएगा and it is switched on. Only this much you need to remember. Okay, now just for your information, where ऐसे मतलब कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा ना कि गेट करंट, मैंने इतना गेट करंट दिया तो ये चालू होगा. व्हाट इज दैट पर्टिकुलर वैल्यू? मिनिमम वैल्यू, इतना गेट करंट होना ही चाहिए ये स्विच होने के लिए. दैट करंट, दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ गेट करंट इज नोन एज firing current. What is it known as? It is known as the firing current. Okay, तो वो मिनिमम वैल्यू, ऐसे कोई भी वैल्यू, कहीं कोई तो अभी 0 दिया मैंने, 0.0001 दिया, फिर भी SCR स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, तो वो क्या वैल्यू है जहां से करंट SCR स्टार्ट होगा? दैट इज नोन एज द फायरिंग करंट.
Okay, and the maximum value, the maximum anode current that can be passed, इसको बिना damage किए maximum current कितना anode current pass होगा, that is known as the forward current rating. Okay, fine. Now ये minimum current जो है, that is the holding current. These are just the definitions you need to understand. Anode, I will repeat once again, just a minute. And minimum anode current जो है जिससे SCR ऑन होगा, that is the holding current. ठीक है, नंबर 1 क्या है, होल्डिंग करंट. मिनिमम एनोड करंट कितना है, करस्पॉन्डिंग वोल्टेज होल्डिंग वोल्टेज होगा. ठीक है, मिनिमम गेट करंट कितना होगा, फायरिंग करंट. फाइन, क्लियर है दिस मच, ऑल दीज 3 डेफिनेशंस. एंड मैक्सिमम करंट कितना है, वो जलने से जस्ट पहले, जलेगा नहीं बट वो खराब होने से मतलब कितना वो विथस्टैंड कर सकता है, मैक्सिमम एनोड करंट इज नोन एज द फॉरवर्ड करंट रेटिंग. These are the 4 definitions you need to remember. Fine. And these 4 definitions, if you're using Pnp publication, I will tell you the page number. Just hold on. The page number is 163. Pnp publication, all the 4 definitions are there. बस उतना ही ध्यान रखना है इसका. ठीक है, you just have to remember that much. Once again, I repeat, gate 0 है तो नहीं on होगा, gate current देंगे तो वो ऑन होगा. ऐसा एक डिवाइस है, SCR 4 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द डायक. ओके, डायक, इसको डायक बोलते हैं. नाउ डायक एक्ट्स एज बाई डायरेक्शनल पीएन जंक्शन. ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो, बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर है ये. दैट मींस इट इज लाइक दिस, बट इफ आई सेपरेट दिस, ये ऐसे दिख रहा है ना, एक पीएन जंक्शन डायोड ऐसे, एक पीएन जंक्शन डायोड ऐसे. So this इसका अगर हम लेयर डायग्राम देखें तो it is PNP, रिवर्स भी होता है, NPN ऐसे भी होता है. This is, there are 2 junctions and 2 terminals like this. Okay, now this diode is a bi-directional diode, same function like the diode, but only दोनों तरफ से current can flow like this and like this also. क्यों, क्योंकि पीएन जंक्शन में एक ही तरफ से होता था ना, राइट. फॉरवर्ड बायस में ही इट इज कंसिडर्ड एज ऑन, रिवर्स बायस में इट इज कंसिडर्ड ऑफ, है ना. तो इस, बट दिस हियर इन वन केस इफ द पोलैरिटी, अगर पोलैरिटी के हिसाब से one diode will be switched on at one time. Clear है? So that is why it is bidirectional. Fine, according to the polarity. This is the diode. नेक्स्ट इज द ट्रायक. ठीक है, ट्रायक में क्या है, सेम डायक ही है, बट हियर लुक एट द सिंबल, सेम थिंग डायक ही है, लेकिन करंट कंट्रोल करने के लिए एक थर्ड टर्मिनल दिया है, दैट इज द गेट. ठीक है, यू नीड नॉट, प्लीज दिस इज नॉट देयर इन योर पोर्शन, आई हैव जस्ट एडेड इट, वो नहीं है आपके इसमें, यू जस्ट रिमेंबर दिस मच, सेम डायक only thing is there is one more terminal gate. ठीक है, fine. So in triac again it is a 4 layer only, 4 layer. It actually is not like that. I will draw it over here. It is something like this, n on 4 corners. In the 4 corners you have n. Okay, and then it is P over here, then you have one more layer of N, and there is one more layer of P. Okay, this is how the structure looks like. Fine, ठीक है. इसका equivalent circuit is this. Equivalent circuit, you may, this is there, I just put a cross, this is very much there. Equivalent circuit, इतने सारे PN, ये actually है SCR, है ना. It is looking like the triac acts like 2 SCRs. SCR कैसा दिखता था, वैसे ही है, सिलिकॉन कंट्रोल. देखो यहाँ पे एक ऐसा ये है, and this over here looks like an SCR like this. So this is also bidirectional. डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी, कोई एक डायोड ऑफ होगा, एक डायोड ऑन रहेगा. ठीक है,
but there are bidirectional, दोनों तरफ current flow होगा, but इसमें क्या advantage है, the gate is there, है ना? So this can be controlled through the gate. Many things can be controlled through the gate. Fine. Now ये जो bidirectional है, I want to you need not go much into detail of this. Only thing I want to elaborate on is the bidirectional thing. Okay, I'll just tell you. Bidirectional ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि normal PN junction को this anode requires a positive polarity and cathode requires a negative polarity to flow. ठीक है, तो suppose मैंने ऐसा वाला polarity दे दिया, तो this diode will be on, this diode will be off, फिर भी करंट आएगा. अगर मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ के मैंने प्लस कर दिया, यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, तो भी चलेगा, ये वाला चालू होगा, ये वाला ऑफ होगा, फिर भी करंट आएगा. That is why it is known as bidirectional device. Okay. Now what I've just put a slide to show the difference between, this is the SCR, डायक, ट्रायक. इसमें bidirectional कौन है? ये दो बंदे हैं bidirectional. क्यों? क्योंकि दो डायोड दिख रहा है आपको सिंबल में दो दिख रहा है, ऊपर नीचे मतलब the current flow, ये दो डायोड की जैसे सिंबल दिख रहा है, that means in both directions the current can flow. But SCR की बात ऐसा नहीं है, it is just a simple this thing with an extra gate, so the current can be controlled. यहाँ पे gate नहीं है तो current control नहीं हो सकता, यहाँ पे gate है तो multiple polarities में आप काम कर सकते हो. Okay, only the basics is there in your syllabus, so you just need to understand this much only. Fine. So with this we end the chapter study of semiconductor components, and this was a major part of your electronics paper 2. I'll see you in the next class. Please feel free to ask any doubts anytime, so that's not a problem. And please see the playlist. Some children are asking, ma'am ye chapter ka itna hi hai. मैं जितना है syllabus में, everything of all chapters is uploaded in the playlist named class 11. Class 11 के playlist में जाइए, you will get all the videos. Okay, so I hope I have made things clear. Thank you.